everyone. Today we are going to start with chapter 14, that is religious festival. So in this chapter we will study about religious festival. As you all know, we have people of different religion living in our country, India. And there are many people, those who follow their own religion and they worship their own God. So India is a nation of festival. We celebrate many national and religious festivals. Our festival is an occasion of fun, joy and happiness for all. The festival celebrated by all of us through our nation. पूरे नेशन जो throughout the nation जो celebrate करते हैं उनको हम national festival कहते हैं. So festivals are broadly divided into 4 types. Birthday of great person, national festival जिसमें आपका Republic Day, Independence Day and गांधी जयंती आ जाती है. Now religious festivals है होली, दिवाली, क्रिसमस, हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, राइट. ये क्या है आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल. नाउ बर्थडे ऑफ ग्रेट पर्सन. सो बर्थडे ऑफ सम ग्रेट पर्सन मे बी सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल. जैसे अगर हम बात करें, क्रिसमस को हम एज अ बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट सेलिब्रेट करते हैं, गुरु पर्व को हम एज अ बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव और गांधी जयंती को एज अ बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड बुद्धा, एस राधाकृष्णन एंड जवाहरलाल नेहरू, they are also celebrated as festival. महावीर जयंती, it's a chief festival of Jains. इसमें किसका बर्थडे होता है? लॉर्ड महावीरा, who has preached अहिंसा. ये एक path of non-violence है. And the people go to their temple and offer prayers. There is a procession of chief gods followed by the community feast in the temple. Children's Day, the birthday of our Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू celebrated Children's Day. ये आपका 40th of November होता है every year. On this day, what happens? Special programs are organized for children in school. Special programs हम organize करते हैं. Then we have Teachers Day, जो आपका 5th of September को celebrate होता है. किसका बर्थडे होता है? Former President Dr. S. राधाकृष्णन. Right? Student decide to celebrate this day to their teachers, जिससे वो उनको मतलब उस टाइम पे क्या होता है, हम flowers देते हैं अपने टीचर्स को, गिफ्ट्स देते हैं, कार्ड्स देते हैं. Next is National Festival. नेशनल फेस्टिवल में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August every year. This day 1947 when India got independence from the British rule, and from 1947 onwards we celebrate this day as our Independence Day. और मेन फंक्शन हेल्ड होता है रेड फोर्ट पे, दिल्ली पे, और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. ऑल ओवर द इंडिया स्कूल और also celebrate Independence Day. प्रिंसिपल होस्ट करती है नेशनल फ्लैग को इन द असेंबली and everybody recites patriotic songs and national anthem. Now Republic Day. Republic Day is celebrated as 26th of January every year. In this year 1950 India become a republic and its main function is celebration. कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है. There is a big parade on Kartavya Path starting from Vijay Chowk of Red Fort. People from all over the country come to Delhi. और in this parade all the units of armed forces, school children और folk dances take part. Many culture programs are also held. बहुत सारे cultural programs भी होते हैं. The children who win bravery award also take part. और वो भी क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं. On both the Independence Day and Republic Day, government buildings को डेकोरेट करा जाता है बहुत ब्यूटीफुली. Now गांधी जयंती. We celebrate गांधी जयंती on 2nd of October every year. बर्थडे होता है महात्मा गांधी and who is called father of nation. और बच्चे इन्हें प्यार से क्या बोलते हैं? बापू. राइट इनकी जो समाधि है वो न्यू दिल्ली में है और कहाँ? राजघाट पर. प्रेयर्स आर हेल्ड ऑन दिस डे. पीपल फॉन्डली रिमेंबर देयर फेवरेट लीडर. द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इंपॉर्टेंट लीडर्स गो टू राजघाट. वो होमेज पे करते हैं, गार्डन पे करते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस फेस्टिवल आर द फेस्टिवल विच पीपल सेलिब्रेट लाइक होली. होली क्या है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स है. इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर. ये It also marks the occasion of harvesting the crops. People meet their friends and relatives and throw colors and gulal on each other. They also throw water with the water guns. और children enjoy भी करते हैं festival. Next is Raksha Bandhan. It's the festival of bond between brother and sister. On this day, sister tie Rakhi on their brother wrist. Brother give blessings and gift to their children. और brother क्या देता है? Blessings देता है, gifts देता है. Diwali, festival of light. It is celebrated 20 days after Dashera. Lord Ram come back to Ayodhya after spending 14 years of exile. People decorate their houses at night. Goddess Lakshmi, Lord Ganesh are worshipped. People light their homes with candles and other lamps. They wear new clothes. ये नए clothes पहनते हैं और एक दूसरे को greet करते हैं. It is also celebrated as New Year Day होता है businessmen के लिए. Now Guru Parv, Sikhs celebrate Guru Parv on the Kartik Purnima. It is celebrated to mark the birthday of Guru Nanak Dev.
All the gurus are decorated on this day and what, और सारे जो गुरुद्वारा से उनको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, लंगर हेल्ड होता है मतलब प्रोसेशन, और लोग जाते हैं गुरुद्वारा में और गुरु ग्रंथ साहिब को रेसिट करते हैं मतलब पढ़ते हैं उसको और एंजॉय करते हैं लंगर। हार्वेस्ट फेस्टिवल, दीज आर द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड व्हेन देयर इज अ गुड क्रॉप, और जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट होने वाली होती है। जैसे बैसाखी जो पंजाब में होता है, कब सेलिब्रेट होता है? 30th of April, when it's time to harvest wheat crop, the field turn golden due to ripen wheat crop at that time. People dance on the tune of ढोल, और वो क्या परफॉर्म करते हैं? भांगड़ा। Onam, mainly celebrated in Kerala, festival lasts for 4 days. It's fall in August or September. People believe that जो किंग महाबली है वो अपने किंगडम में आए थे इस दिन, और लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, and procession are held and taken out and decorated with elephants. Boat races होती है ओनम में, लॉन्ग बोट्स जिसको हम स्नेक बोट कहते हैं। मैनी अदर फेस्टिवल्स तीज, लोहरी, शिवरात्रि, नवरोज, मोहर्रम, गुड फ्राइडे, ईस्टर आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट? So this is all in this chapter. Now we are going to start with the exercise. Now festival of color is called, festival of color क्या है? होली। गुरु पर्व is the birthday of Guru Nanak Dev. Onam is celebrated in Kerala. Mahavir Jayanti is the chief festival of Jains. Next is Baisakhi is the harvest festival of Punjab. Now next is fill in the blanks. So Republic Day is celebrated on, Republic Day हम कब celebrate करते हैं? On 26th of January every year. Gandhi Jayanti is the birthday of, गांधी जयंती पे किसका बर्थडे होता है? महात्मा Mahatma. Dash is celebrate as the birthday of Jesus Christ, that is Christmas. Diwali is the festival of light. Onam is mainly celebrated in Kerala. Now write T for true and F for false statement. First is Holi is festival of color. It's true. Baisakhi and Onam is harvest festival. It's true. Gandhi Jayanti is celebrated on 5th of October. False. कब होती है? 2nd of October. Republic Day is a harvest festival. False. National festival. Independence Day is celebrated on 15th of August. It's true. Now, answer the following question. Why is India called Nation of Festival? क्योंकि यहाँ पे people of different religion live here. How do we celebrate Independence Day? हम host करते हैं national flag को, and there is a parade ahead. How is Diwali celebrated? Festival of light. People fire the crackers, wear new clothes, and they distribute sweets. How do we celebrate Holi? It's a festival of color. हम एक दूसरे पे गुलाल फेंकते हैं, कलर फेंकते हैं. Why do we celebrate गांधी जयंती? हम क्यों गांधी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं? Because it's the birthday of Mahatma Gandhi, who is known as the father of nation. Right? So this is all in this chapter. Now we will meet in the next class. Thank you.